Dr. Sunita, shall we start? Around 45 people are there. Or shall we wait for 5 more minutes? What do you suggest? Okay. Okay. हाँ, okay. ठीक है. So, can everyone have their videos on? And is sponsored by Chhattisgarh Council of Science and Technology. And the theme for this year is Global Science for Global Well-being. And it is a great time that we are celebrating Science Week. And now it is the time to brief you all about the program taking place on National Science Day. Today, we are having Scientific Induction Program. Under this program, an awareness workshop under the title Path to Scientific Research will take place. This workshop will give an overview of science, research, career opportunities, facilities, and network in India. This workshop is jointly organized by our college and VMR, that is V Mentor Research, which is a Skill Foundation initiative. VMR is a pilot project of Skill Foundation which aims to empower and guide the young students to pursue career in scientific research and contribute towards research and innovation in the country. I heartily welcome Dr. Mamta Agarwal and Dr. Pankaj Kumar as the speaker of this workshop. On the next second day, that is on the 20th February 2023, we are conducting essay writing competition and quiz competition for our student. On 27th February 2023, we will be having oral and poster presentation from the master and the research students, followed by the valedictory function. To this, this will be our schedule for the National Science Day. Now I request our patron, Dr. R.N. Singh sir, to please bless us and motivate us with his words. साइंस डे वीक के इस अवसर पर पाथ साइंटिफिक रिसर्च की ओर से ममता अग्रवाल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है. साइंस डे के इस अवसर पर हमारे बीच पाथ टू साइंटिफिक रिसर्च और गवर्नमेंट बीवाईटी ऑटोनॉमस कॉलेज दुर्ग के संयुक्त तत्वाधान में
यह आयोजित कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर ममता अग्रवाल, फाउंडर स्किल फाउंडेशन PMR, डॉक्टर पंकज कुमार, महाविद्यालय की ओर से कन्वीनर डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव जी, डॉक्टर अजय सिंह जी और सभी शामिल हमारे साइंस के अध्येता। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे महाविद्यालय के और पाथ साइंटिफिक रिसर्च के संयुक्त तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। विशेष रूप से ऐसे कार्यक्रमों की महत्ता इसलिए बढ़ जाती है कि साइंस के रिसर्च के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में साइंस को कैसे पॉपुलर किया जाए, साइंस को लैब से निकाल करके लैंड तक कैसे पहुंचाया जाए, जमीनी हकीकत तक कैसे पहुंचाया जाए, ये इसका मूल उद्देश्य है। मूलतः आज की जरूरत जो है साइंस के क्षेत्र में यह है कि साइंस को किस तरह से सार्वजनिक जीवन में उपयोग के लायक बनाया जाए, ताकि साइंस लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सके। विशेष रूप से बेसिक साइंस की ओर से लोग जो विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, उनका झुकाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जो भी रिसर्च हो रहे हैं वो रिसर्च मात्र लैब में शामिल है या एक पुस्तक के रूप में या अलमारियों में बंद है। उस रिसर्च को कहीं ना कहीं सामाजिक जीवन में उतारने की महत्वपूर्ण जरूरत है। ऐसी स्थिति में ऐसे जो आयोजन हैं, उन आयोजनों का महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है यही है कि साइंस को सामाजिक जीवन में किस तरह से पहुंचाया, सामाजिक जीवन में किस प्रकार से उपयोग किया जाए। ऐसे समय में ऐसे आयोजन की सार्थकता सिद्ध होती है। इस महत्वपूर्ण आयोजन में हमारे बीच पाथ साइंटिफिक रिसर्च और शासकीय BYT ऑटोनॉमस कॉलेज के जो भी हमारे संयोजक हैं, उनको मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने महत्वपूर्ण रूप से यह आयोजन किया है और इसमें शामिल सभी भी जो अध्येता हैं, जो रिसर्चर हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर वो महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करें ताकि साइंस के क्षेत्र में बेहतर प्रचार प्रसार संभव हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। Thank you so much, sir. Now let us move to our scientific induction program, and let me take this opportunity to introduce Dr. Mamta Agarwal to you all. Dr. Mamta Agarwal is a nuclear physics scientist working at the Department of Physics, Mumbai University, and she's been actively doing theoretical research for more than 20 years. She has worked in few eminent research institutions like STIFA, IUAC, Inter-University Accelerator Center, and published more than 60 research papers in reputed research journals. Her research interests are hot rotating nuclei, nuclear level intensity, exotic nuclei, and neutron halo. She has been awarded many research projects by DST, Government of India, and she is an elected fellow of the Academy of Sciences, Chennai. She is the member of the editorial board and reviewer of the reputed journals. Dr. Mamta has also been very active in social cause like Women in Science, computer literacy for underprivileged. She is a founder and trustee of Skill Foundation, a charitable trust which aims to create awareness about the science, research, and career opportunities in science and provide career-oriented skill. So with these words, I would like to request Dr. Mamta Agarwal to please deliver some good initiative for the students. Ma'am, please. म्यूट मैम, अनम्यूट कीजिए। ठीक ठीक। Okay. Hello and very good morning to all of you. First of all, I would like to thank the Durg Science College Principal, Dr. R.N. Singh, faculty members, Dr. A.K. Singh, Dr. Anil Kumar, Dr. Sunita Singh, and all the other faculty members and the entire team of Durg Science College for hosting this event and giving us this opportunity to interact with young students who are our future scientists. VMR is an initiative of a non-profit organization, Skill Foundation, and it aims to empower and guide the young students to become scientists. हमारे यंग स्टूडेंट्स साइंटिस्ट कैसे बने, उसके लिए उन्हें मेंटर करना, गाइड करना और सपोर्ट करना is the main objective of VMR. So on behalf of VMR and its entire team, I take immense pleasure to welcome you all for the awareness workshop on the path to scientific research, opportunities, facilities, and network in India. The purpose of this initiative is to motivate and guide students for science research. So I'll share my screen.
Yeah, is it visible to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So first of all, I will give you an overview of a very interesting and current research topic, exotic nuclei, a new world to explore. This is a very interesting and a current topic और बहुत सारी countries इस topic पर research कर रही हैं. But still you will realize it is so simple to understand this simple concept और इसकी इतनी simple concept से कितनी interesting और real new physics emerge हो रही है. And it is also useful for social and real life applications. And then I will talk about various science opportunities and prerequisite skills. Now, if we look at the scenario of science and research today, so as we all know that science of today is the technology of tomorrow, and no nation can grow without science and research. Now, what is the situation currently in India? Now, there is a strong momentum and growth by Government of India, but we have a long way to go. India is aiming, as you all know, must have heard, that India is aiming to go from a developing to a developed nation. Now, investments in science and R&D by Government of India and multinational companies is rising. More and more multinational and private companies are setting up their R&D centers in India. इन सब से क्या होगा? Opportunities बढ़ेंगी, पर वो opportunities के लिए क्या हमारा youth तैयार है? We all know that we have a huge talent pool that is youth, that is you, आप सब. तो आप सब क्या इन opportunities को grab करने के लिए तैयार हैं? No. You need to be, the youth has to be trained, skilled and empowered scientifically to contribute to the growth of the nation. What our youth needs? आप लोगों को क्या चाहिए? You need good job, good opportunities and good life. For that, you have to be trained, skilled and empowered. So what is the role of VMR in all this? Now, increasing demand of R&D growth, it needs active participation from the scientists and students to meet the goals of a developed country in coming years. And for that, our students have to be skilled and motivated, and they should have good resume, which so that they can be employed in multiple research sectors. So VMR, we scientists, we have started this initiative. What we are trying to do is to bridge the gap between the students and the opportunities in science and technology. But इसके लिए students and scientists, they will have to work together और उसको इंडिया की ग्रोथ में मिलकर काम करना होगा. Students they have to work hard, they have to read, they have to learn various things, and scientists are there to guide them, support them and help them. So let's work on Vigyan. Is it visible and audible to all? Yes, ma'am. It is visible as well as audible. Okay, fine. I'll go ahead. So if we scale universe from macro to micro in units of meters, we have all sorts of dimensions existing. And then from each dimension, there is a stream of science emerges, like universe, galaxy, solar systems, Earth, then we humans, then cells occur where biology and things occur, chemistry, then molecules, atoms, nucleus. Nucleus is 10 raised to power minus 14. And since today we are talking about nucleus, so we will just focus on the nuclear physics and the atomic nucleus. Now, as we all know, and I'm sure आप सब ने भी पढ़ा होगा अपने 12th standard में और BSc में, that the nucleus, the composition of an atomic nucleus is it's made of protons and neutrons. Now, this is the symbol of to express a nucleus. At the left bottom, we have proton number. The right bottom is the neutron number, and their sum is the mass number of the nucleus. Now, for any nucleus, proton number is always fixed, but the neutron number need not be same. So if you look at the periodic table, which we have now reached up to 118 organizations, this is the latest newly discovered particle in the in research. Now all these nucleus which we are seeing, all these elements which are available in universe, we are seeing in our day-to-day life, they are all these numbers are denoting the proton number of these nucleus. But the neutron numbers are not the same. For example, hydrogen, it has one proton in all. It has three varieties. Now it has one proton and one neutron with two neutrons, and one proton with three neutrons. So nucleus can exist with different neutron number, and they are known as isotopes. And I'm sure you all know this. This is something not new. But since I want to, मैं आपको एक बहुत ही basic से समझाना चाहती हूँ. That is why I'm just discussing this.
So now we have to see that the ratio of neutron to proton is very important for all kinds of properties. Now, if they have too many neutrons or if they have too less neutrons, then they are unstable. Now, what does instability means? We have to understand what is the role of neutron and proton ratio in the stability of a nucleus. So for that, first we compare the radius of nucleus with the radius of an atom. Now, if you look at the numbers, radius of nucleus is 10 raised to power 5 times smaller than the radius of atom, whereas the binding energy of nucleus is 10 raised to power 6 times that of atom. That means कि अगर एक atom से एक electron remove करना हो, तो you just have to apply only few electron volt energy, whereas to remove a neutron or proton from a nucleus, we have to apply 8 to 10 million electron volt, that is 10 raised to power 6 times the energy. So how these nuclei are so strongly bound? जबकि हमें पता है कि उनमें प्रोटॉन्स हैं एंड प्रोटॉन्स शुड रिपेल. प्रोटॉन्स में कूलम फोर्सेस होते हैं जो कि लाइक चार्जेस को रिपेल करते हैं. सो रिपेलिंग प्रोटॉन्स शुड ब्रेक द न्यूक्लियस अपार्ट, बट इट इज नॉट हैपनिंग. न्यूक्लियस बहुत ही स्ट्रांगली बाउंड है, मच स्ट्रॉन्गर देन द एटम. व्हाट कीप्स देम सो स्ट्रांगली बाउंड? So these forces are called nuclear forces, which are attractive and very, very strong. So this strong force, it binds together protons and neutrons together very strongly. And this charged, so these neutrons provide the attractive, these nuclear forces provide the extra attractive force to bind and to overcome the Coulomb forces. So basically there is a competition between Coulomb forces and nuclear forces. And whoever is more will decide the stability of the nucleus. So if we plot neutrons versus protons, so as we see that the n is equal to z line is this, and this is the stability value, that all the stable nucleus which exist in nature, they fall in this region. But this is very far from n is equal to z line. Why? So this is something which we have to understand from the competition between Coulomb forces and the nuclear forces. So when Coulomb forces increase, because they increase very fast as square term, so as neutron proton number increases, the Coulomb forces increase very fast, and then the neutron attractive forces are little less, and the nucleus becomes more unstable. They start weakening the binding. So then the nucleus needs neutron excess. Excess of neutrons provides extra attractive nuclear force so that it overcomes the increasing Coulomb force. So basically लाइफ में भी ऐसे ही हमने देखा ना कि जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वही जीतेगा. So in this also, so extra neutrons, they provide attractive force and then they stop the Coulomb forces. So this is how the stability value is far from the n is equal to z line, especially when the Coulomb forces are more, when the proton number is high. For light nuclei, we can see that 40 calcium, 16 oxygen, they are stable. But when heavy nuclei like strontium, 38 proton and 13 neutron is not stable. Instability means what? The stable isotopes, they have long life, they live longer. But unstable isotopes, they decay soon and their lifetime is small. So these nuclei to be stable, they need extra neutrons. So strontium में 38 protons हैं, but it needs 46 neutrons to be stable. In the lead, 82 neutrons, it needs 40 extra neutrons to be a stable nucleus. In nature, there are less than 300 stable or long-lived nuclei that lie on this valley. Stability valley it is called. But when we include unstable nuclei, we have more than 3,000 nuclei. Now, unstable nuclei lie on both the sides of the stability, towards the proton rich and towards the neutron rich. So, one thing we understand, बहुत कम खाया, कोई भी चीज बहुत एक्सेस हो या बहुत डेफिशिएंसी हो किसी भी चीज की, तो हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है. Similarly, for a nucleus, too many neutrons or too neutron deficient, like too less neutrons, are not good for health of nucleus. So I'll take the example of lithium. Now, lithium with 3 protons and 3 neutrons is a stable nucleus. 4 neutrons is also stable, but 8, 9, 10, 11, 12, 13 is not stable. Now, 11 lithium is one special nucleus which opened up a new era of research in 1985. 11 lithium was the first exotic nucleus discovered by I. Tanihata. He was from Riken, Japan.
He's a scientist, and this experiment was performed at University of California in Berkeley. Now, exotic से हम क्या समझते हैं? जब हम सुनते हैं कि वर्ड exotic, तो ऐसा नहीं लगता कि हम हमेशा बोलते हैं ओ वाओ क्या exotic लोकेशन है, स्विट्जरलैंड कितना exotic है दिखता है, या किस खाना कितना exotic है. जब हम किसी को बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली देखते हैं तब हम उसको ये वर्ड यूज करते हैं. दैट इज समथिंग एक्सट्रीमली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी has somebody, then we say, oh, what a exotic location or food or address or something. Similarly, these nuclei, they have some extraordinary features or properties, and that is why the scientists named this nucleus as exotic nucleus. Now, what are the extraordinary features of these nuclei? So first thing was they had extreme isospin, that is extreme neutron to proton ratio. It has Z3, 3 protons, it has 11 lithium, but it had 8 neutrons. Now 8 is almost 2.66 times that of the more than double number of neutrons are there in this nucleus. So they are very weakly bound. Weakly bound means the normally separation energy, the energy required to remove a neutron is 8 million electron volt. But for this, the energy is only less than 1 MeV. Now, third thing is they had a very, very short half-life, 8 milliseconds. So this nucleus exists only for 8 milliseconds and then it decays. So it is a very, very unstable nucleus. But now do you realize that this 8 millisecond का nucleus को भी हमारे scientists study कर पाए lab में, उसको बना पाए, synthesize कर पाए और उसकी properties को study कर पाए. This shows that our scientific technology is so advanced that we are able to study nuclei with 8 millisecond lifetime. Now, another interesting feature, this had the extended density tail. Now, if you plot density of any nucleus versus radius, the density plot is always like this. It is maximum at the center and then slowly it becomes zero when it comes towards the surface. But these exotic nuclei had a long extended density tail. See here also, it has not become zero. It is still extending. So this extended density tail was a surprise for our scientists. They were very surprised. They had never seen this before. पहले ऐसे density tail, long density tail was never seen. Now we have found this some more nuclei which are exotic. This is our work. We have found that other nuclei also which have long density tail. And they are also exotic nuclei. So बहुत सारे scientists अभी ढूंढ रहे हैं नए exotic nuclei. Another interesting feature it had, if you plot the radius versus mass number in the periodic table, then the radius varies smoothly with mass. जैसे जैसे mass बढ़ता है धीरे धीरे radius बढ़ता है. But exotic nucleus में suddenly इतना high radius, इतना ज़्यादा radius shoots up. Then it was a surprise for the scientist community, जो ये experiments perform कर रहे थे. And then these things, so there were two nucleus, exotic nucleus. Initially, the first two nucleus discovered were 11 lithium and 11 beryllium. So their separation energy, that is energy removed to neutron, is just 300 kilo electron volt. And for this, it was 500 kilo electron volts. So we understand that these nuclei, they have a core, a tightly bound, 3 protons and 3 neutrons are tightly bound. And this is known as a core. But the last extra 2 neutrons are wandering little far away and they surround the central core like a halo. So these isotopes, they consist of a compact nuclear core and a cloud made of diluted nuclear material, which is called halo. And that is why this was also called a halo nucleus. Now do you realize that such a simple concept, इसमें क्या था? हमने सिर्फ देखा बहुत simple सा concept था, that neutron and proton ratio in a nucleus, and it creates the instability, and that creates and then we are able to study them. So this exotic nuclei, these open a new era in physics research. After 1985, many countries are doing research and they are trying to find out new properties. In fact, in exotic nuclei से हमें बहुत सारी novel नई nuclear properties देखने को मिल रही हैं. They are helping us to understand various astrophysical, nuclear medicine and diagnostic procedure. Can you guess what is the use in diagnostic procedures? Like one can guess, see their lifetime is very short. हम बोलते हैं कि जब हमें radiations आते हैं हमारी body को नुकसान पहुंचाते हो. But इनकी lifetime इतनी short होती है कि they don't remain in our body. They decay themselves. So they are useful for such radiations and for many, many purposes. We are using these nuclei. So now you see that these nuclei,
this is such an interesting topic which is easily understandable. But to study these nuclei theoretically and experimentally is a huge, huge task. And these experiments are, this is the Riken Japan lab. Then this is the Berkeley lab, one of the labs. There are many more like these. So in these labs, the experiments are being performed. This is how, and this is our TIFR in India. We have a Tata Institute of Fundamental Research. It's a wonderful place for learning. And these are the labs where these such experiments are conducted. See these beam halls. So it's not that it is so simple. You have to prepare a target. You should have a beam, and then there is a lot of electronics and a lot of physics goes, a lot of engineering goes in conducting these experiments, and it takes a lot of effort. So this is how, but we have all these technologies available. We are able to study ये सब nucleus हम पढ़ पा रहे हैं. बहुत सारे nucleus discover किए हैं. This is GSI. This is an institute in Germany, and they have a lot of programs for students. जहाँ पर students काम कर सकते हैं, research कर सकते हैं. So आपके काम की बात. Now, where are the institutes where research is going? This research is happening in various countries across the world. Right from Japan, China, India, Korea, Italy, Germany, Switzerland, USA, everywhere. This is the entire list of institutes, international institutes where these research is accelerator laboratories are there. यहाँ पर ये लोग research कर रहे हैं. और हमारे Indian scientists in सब research labs में अगर आप जाएंगे, you will find our Indian scientists are doing wonderful job. They are collaborating and they are doing fantastic work at these labs. Now, what about India? In India, we are not lagging behind. हम किसी से भी कहीं भी पीछे नहीं हैं. India में major accelerated related programs are being pursued at Bhabha Atomic Research Center, BARC, TIFR, Mumbai, VCC, Calcutta, NSC, IUAC at Delhi, CAT, Indore, and many more. In some institutes में, you can, after MSc, one can join as a scientist, or you can join PhD, or you can do projects. Now, India is collaborating with most of the international accelerator facilities in Europe, USA, and Japan. So our scientists are participating and contributing equally internationally. Now, where you can get jobs. Now, students always feel कि scientist शायद बहुत मुश्किल होगा, या हम कहाँ apply करें, हमें पता नहीं है कि कैसे करना है, what is the path. So here is all the information which we are trying to provide you. There are many government organizations of scientific research where one can work as a scientist. After MSc, they recruit scientists directly. There is a direct recruitment of scientists. After MSc, you can apply. So Department of Atomic Energy, Government of India, this is their link. You can check their website and find out all these institutes, BARC, IGCR, Kalpakkam, Raja Ramanna Center, Indore, VCC, Calcutta, Atomic Minerals Director and Exploration and Research, Delhi, Bengal. This is in many cities, and HRI, Prayagraj, Allahabad. All these organizations, they come under Department of Atomic Energy. They have all the atomic and nuclear programs going on, and various other subjects also they are doing research. So please check their websites and go and find out opportunities for them. They all have recruitment direct after MSc, and they also have internship programs within the summer programs. Now, ISRO हम सबको पता है, बहुत सारे बच्चों को हमें मिलता है फीडबैक कि मुझे ISRO ज्वाइन करना है. I want to become a astrophysics scientist. I want to become a space scientist. So Department of Space के अंडर में आता है ISRO, and ISRO has many centers. Vikram Sarabhai, these are few. There is a huge list I have. All these centers, they are belonging to ISRO, and they all have opportunities for you. ISRO has some autonomous bodies also, like PRL, then Semiconductor Lab, National Atmospheric Research Lab. And there is another one interesting thing is that Space Technology Incubation Centers. कुछ स्टूडेंट्स आजकल बहुत इनोवेटिव हैं, किसी को बहुत अच्छे आइडियाज आते हैं, आपको कुछ अपना स्टार्टअप करना है, आपके पास कुछ बड़ा ही इंटरेस्टिंग आइडिया है. सो ओके, डोंट हेसिटेट टू डिस्कस इट विद योर टीचर्स, विद साइंटिस्ट, एंड जस्ट एक्सप्लोर. अगर वो पॉसिबल है और वो हो सकता है, उस आइडिया को हम उस पर काम कर सकते हैं, हो सकता है वो बहुत ही यूजफुल आइडिया हो, उससे सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम हो सकता हो, तो यू शुड कम अप विद योर आइडियाज एंड ट्राई टू गेट इन टच इन सब इंस्टीट्यूट्स के साथ.
So they give grants for startups. DST also gives Department of Science and Technology. They also give grants for startups. Now, for career opportunities for students, you can go on their ISRO website, then go to capacity building, sponsored research, and careers. So look at those places, and you will find कि आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है. सिर्फ विल पावर चाहिए और मेहनत चाहिए. मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसके बिना कहीं भी कुछ नहीं होगा. नाउ डिफेंस DRDO, हमने कोविड के समय बहुत इसका नाम सुना क्योंकि बहुत सारा काम किया इन्होंने. दे हैव बीन डूइंग वंडरफुल रिसर्च. Now they also recruit scientists after MSc, and then you can join PhD also with many scientists there. You can do internship programs. CSR, Council of Scientific and Industrial Research. This is an innovation and outreach hub, research and development. And they have their centers across India. In almost in every city, they have a huge list. If I show you the entire list, they have so many centers where you can. And it's almost, you don't have, ऐसा नहीं कि आपको घर से बहुत दूर जाना पड़ेगा. I mean, almost every city में इनका सेंटर है कहीं ना कहीं. पता करो और उसके बाद अप्लाई करो CSIR में. इनका JRF, that is Junior Research Fellowship भी देते हैं. SRF, they have fellowship programs also. See, this list is never ending. खत्म ही नहीं हो रही है, इतनी लंबी लिस्ट है. So, CSIR. Now we have institutes like TIFR, which is a wonder, which I showed you in pictures. GMRT, this is also TIFR associate. IUCA, this is an inter-university and बहुत ही अच्छा सेंटर है एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स में. अगर किसी को इंटरेस्ट है पूना में, तो इनके स्टूडेंट्स प्रोग्राम्स यहाँ पर होते हैं. ये सब लिस्ट हम आपको दे देंगे if you want. And then ARIES, they also have very good faculty positions, opportunities for students. Now you can also find research-oriented government jobs. So you will find in employment news also. You should be regularly. You should check that. Now also we have IITs, IISc Bangalore, ICERs, NICERs, जहाँ पर opportunities हैं students के लिए, internships करने के लिए, programs, summer programs, schools, they are doing a lot of activity. मतलब आपको हर तरफ से देखना होगा कि कहाँ जाएं, कहाँ opportunities की कमी नहीं है, आपको ढूंढनी होगी. कुछ हम आपको बता भी रहे हैं. ना कुछ बच्चों को जिन्हें मैथ्स में इंटरेस्ट है, जो मैथ्स में बहुत अच्छे हैं और जो मैथ्स में बहुत ही पैशनेट हैं, then they should definitely try Institute of Mathematical Sciences, Chennai. This is a wonderful institute for mathematics. Then SN Bose National Institute, Saha Institute for Nuclear Physics in Kolkata, and JNCASR. Sameer is an institute for electronics and information technology. It is in Mumbai. And IUAC. Dr. Pankaj will tell you about IUAC. This is a wonderful place for students, for learning, for research, and it has a wonderful life. If you get a job, your life is wonderful there. So you all must try to get there and do something with them. This is another new facilities is getting developed in Madurai, Indian Neutrino Observatory. Now यहाँ पर कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग, ऐसा नहीं है कि साइंस बहुत बोरिंग है, आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है. इट इज लॉट ऑफ फन आल्सो. आई मीन पीपल आर, ऐसा नहीं कि लोग बहुत ज्यादा मतलब सब जिंदगी में जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं है और सब पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है. दे लिव नॉर्मल लाइफ, दे हैव वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स टू डू, और ये सब करने में मजा भी आता है. कई चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग है लैब्स में. और इवन थ्योरेटिकल साइंस आल्सो, इफ यू लाइक थियरी, आपको कैलकुलेशंस, इक्वेशन सॉल्व करना अच्छा लगता है, देन थ्योरेटिकल फिजिक्स आल्सो इज अवेलेबल. थ्योरेटिकल साइंसेस, you can do research in theoretical science. Now this neutrino observatory, this has a 50,000 tons of ultra pure water they need for their research. And see, a person working there is traveling inside the water tank in a boat. So sometimes it is fun also to do research. So yeah, so this is now TFR. These pictures I've already shown you, these labs. Okay, now these all labs or whatever I showed you now, these are all wonderful places of learning. There are all kinds of ideas of science, mechanics, simple motion, rotational motion, mathematical physics, atomic, molecular, nuclear physics, electronics, material science, chemistry, maths, IT, software, hardware, engineering, application, innovation. ये सब अप्लाई होता है, तब जाके एक एक्सोटिक न्यूक्लियस डिस्कवर होता है. तो वही एक्सोटिक न्यूक्लियस का एक्सपेरिमेंट सेटअप करने में इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है. So you can say how many scientists are working towards just looking at one property or one science idea.
सो बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल. आप ही के जैसे बच्चे हैं जो वहां जाके बड़े हो गए, साइंटिस्ट, उन्होंने काम किया और उनको सही जगहों पर पहुंच गए एंड दे आर डूइंग रिसर्च. तो कुछ ऐसा नहीं है कि कोई अनोखा कुछ करना है इसके लिए. यू जस्ट हैव टू वर्क हार्ड एंड कीप योर ऑप्शंस ओपन. So you have to just dream and make efforts. Then it's all yours. अब इन सब चीजों के लिए आपको करना क्या है? Okay, so how to reach there? तो कुछ चीजें आपको पता है कि CSR, UGC, नेट, गेट, जेस्ट, नेस्ट, ये सब एग्जाम्स हैं जो आपको क्लियर करने होते हैं फॉर PhD फेलोशिप्स. बट ये सारे जो इंस्टीट्यूट्स जो मैंने आपको दिखाए, इन सब का अपना अपना एग्जाम भी होता है. लाइक TIFR, IU का, मार्क, PRL, IIG, HRI, SINP, इन सब के अपने एग्जाम्स होते हैं. They have their own program, they have their own entrance exam. If you have इनमें से CSR, UGC, नेट की फेलोशिप, then also you can go to these institutes. But you can apply in them also. See, your chances become more. So if you apply to all these institutes and prepare well, of course, and so कहीं ना कहीं तो आपकी बारी आएगी ना. You have more chance to get into these institutions. Now these are all the funding agencies like Department of Science and Technology, DST, CSIR, I told you, UGC, DBT. जो लोग बायोटेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड है, they have lot of schemes for girls especially. So जिन लोगों को बायोटेक्नोलॉजी और साइंसेज में इंटरेस्ट है, they should definitely try and apply in DBT, BRNS, DRDO and ICAR and ICMR, that is for medical research. ओके, नाउ बहुत सारे बच्चों ने हमसे ये पूछा कि साइंटिस्टों को सैलरी कितनी मिलती है. इज देयर एनी मनी? आई मीन, आई वांट टू मेक मनी. ऑफ कोर्स देयर इज नो हार्म. आई मीन, यू शुड हैव गुड लाइफ. आपके पास अच्छी सैलरी होनी चाहिए और हर बच्चा चाहता है कि उसको अच्छी सैलरी हो, अच्छी जिंदगी हो. सो आई मस्ट टेल यू, द असिस्टेंट प्रोफेसर और अ साइंटिस्ट जो स्टार्टिंग सैलरी है और एक IAS ऑफिसर की जो स्टार्टिंग सैलरी है, दे आर द सेम. सो बिकमिंग अ साइंटिस्ट और एक IAS ऑफिसर, दोनों की सैलरी डिफरेंस नहीं है. So don't be in any illusion that there is no money in research. You have a very good life. You are working for your passion. जैसे मुझे न्यूक्लियस पे रिसर्च करना, कुछ ढूंढना, उस पे सर्च करना अच्छा लगता है. And I am paid for following my passion. मेरा काम मेरे लिए काम नहीं है. It's my interest. It's my passion. और जब आप PhD कर रहे हैं, so JRF, SRF, fellowships are also good. JRF is 31,000 plus HRA. So when you are doing PhD, then also you are paid a good amount of money. And if you go abroad, then you have lot more money for postdoc or for PhD, for postdoctoral research or for PhD you can go. And money is not a problem in research. So don't worry about that part. Now this was for the government side. What are the government job opportunities for you? But now various private sector companies working in fields like semiconductors, fuels, energy, LEDs, sensors, optical components, batteries, IT networking, programming, etc. They also hire science graduates, postgraduates and PhDs. जैसे GE India, Thor Lab, Philips India, Samsung, IBM, Reliance, Intel, Thermex India. इन सब में भी साइंस ग्रेजुएट्स की जरूरत होती है. फिर वो कंपनी उनके हिसाब से जो उन्हें चाहिए होता है, स्पेसिफिक कुछ भी टैलेंट, जो भी उनको स्किल चाहिए होता है, दे मे ट्रेन यू, दे मे आस्क फॉर यू एंड देन यू कैन लर्न दोस स्किल्स एंड देन यू कैन बी एम्प्लॉयड इन दीज कंपनीज. उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? यू शुड हैव अ लिंक्डइन प्रोफाइल. एक अच्छा सा प्रोफाइल बनाइए लिंक्डइन पे एंड लुक फॉर जॉब्स फॉर योरसेल्फ. इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा सा और एक इंटरेस्टिंग ग्रेट करियर, मेरा फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट आल्सो, एंड इट्स अ ग्रेट करियर ऑप्शन व्हिच इज रिसेंटली इमर्जिंग, दैट इज साइंस कम्युनिकेटर एंड राइटर. कुछ बच्चे बड़ा ही अच्छा लिखते हैं, बचपन से उन्हें लिखने का शौक होता है. कुछ बच्चे पोइट्री लिखते हैं, कुछ बच्चे अच्छे अच्छे आर्टिकल्स, कहानियां, स्टोरीज लिखते हैं. सो व्हाई नॉट राइट साइंस? साइंस जो, जैसे अब मैंने आज आपको एक्सोटिक न्यूक्लियस के बारे में बताया, क्या आपको पता था? मतलब कहीं आपने जनरली कहीं नॉर्मल जगहों पे नहीं पढ़ा होगा. सिर्फ जो साइंटिस्ट कम्युनिटी है, जो साइंस पे रिसर्च कर रहे हैं, उन्हीं को शायद पता है. तो एक आम इंसान तक साइंस की रिसर्च कैसे पहुंचेगी? हाउ इट विल रीच द कॉमन मैन? तो उस तक पहुंचाने के लिए कौन जिम्मेदारी उठाएगा? हम ही सबको उठानी है. तो साइंस जर्नलिज्म, साइंटिफिक मीडिया, ब्लॉगर इन साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, राइटर्स, कम्युनिकेटर्स फॉर R&D labs and academicians, journal publishers and science writers in regional languages. So regional languages में आप अपनी regional language में एक exotic nuclei पर एक article लिख के you can
you can publish it somewhere and you can write blogs. तो हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने इस करियर ऑप्शन को किया है and they are doing very well and they are very happy क्योंकि उनको लिखने का शौक था और अब वो इसरो और जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए लिखते हैं, जो वहाँ रिसर्च होती है उसके बारे में पढ़ते हैं और they write for them. They are regular bloggers, and so this is another career opportunity which you can try, or maybe you can do it as a hobby also, as a side income. Now IPR, this is Institute for Plasma Research. They also have many programs for students, summer training program, graduate and postgraduate research, PhD fellowships, and their applications are invited often from time to time. So please check their websites regularly. There are few more areas which I really want to mention. Forensic science. Now हम सब ने तो देखा ही होगा forensic science की कहाँ जरूरत होती है, crime में, we have all seen in CID. Now UPSC and SSC, they regularly advertise for positions of senior and junior scientific officers. Now यहाँ पर qualification क्या चाहिए? BSc, MSc, Biochem और Physics. They have so many branches: toxicology, biology, serology, ballistics, physics, audio, cyber, DNA. So कहीं पर BSc, MSc Bio चाहिए, कहीं पर BSc, MSc Biochemistry, Bio और Chemistry, और BSc, MSc Physics. So these are also fields where if you have interest in such things, yes, definitely why not apply, why not try. Clinical research is another field in related to medical field, और इसके बारे में आजकल हमने कोविड के दौरान ज्यादा सुनने में आया क्योंकि रिसर्च चल रही थी और हम कोविड के वैक्सीनेशन ट्राई कर रहे थे लोगों पर. So this is a branch of healthcare science that determines the safety and effectiveness of medicines, devices, diagnostic products and treatment. So clinical trials are research studies performed in people that are aimed at evaluating a medical, surgical or behavioral intervention. Now इसके लिए qualifications क्या चाहिए? BSc, MSc in any branch of science. MSc in clinical research is also there. Any BSc, MSc student with diploma and certification course also helps to enter in this clinical research industry. This research industry is also expanding, and MSc in biochemistry or biotechnology is helpful in this field. In fact, Tata Memorial Hospital in Mumbai, they have a program, the MSc in clinical research, and doctors themselves teaching there. They provide training and internships. So if some students are interested in this kind of work, then they can apply there for internships. At least do some internships, projects with them, so you will know if you like that work or not. And biotechnology, that BSc with bio or chemistry, then you can, this has a lot of research opportunities because आजकल इसमें बहुत research हो रही है, India में भी और abroad भी. And it has further many fields like immunology, were the people who work for vaccines in COVID. So you can apply for internships, then you should pass NET, SET, GATE exam or DRDO, ICMR, DBT, UGC, CSR exams for fellowship. And you can join PhD for research, or you can clear GRE and TOEFL, and you can go abroad also for research. It has a lot of scope for research. Biotechnology and these fields have a lot of scope in research. So you can try that. There are few more interesting areas where science students can go, and they are needed actually. They should work in these kind of fields because water is very important. We can't survive without water. So water science and technology. Various IITs, ISC, Shivnadar University, Terry University, and many IITs, they are offering courses or maybe they are offering PhDs. Now physics is used to develop material for water purification, sensing water pollutants. So this is a very important area and a lot of work is needed in this. Research is going on. So yes, this is another field which you can try. Data science, I think we all know these days is a very popular profession, so to say. And this uses scientific methods on large data. So it's a multidisciplinary field useful across industry, government, retail, in so many sectors like gaming, energy, finance, government, pharma, health, internet, etc., etc., etc. So data science, yes, you can. There are so many courses going on in data science. You can do that course with your BSc or MSc background, and then you can be absorbed in any of these industries. Solar energy is a very, very useful area. We know, our government is trying very hard to make our energy efficient, solar energy. It has many entrepreneurship ideas also. जिन बच्चों का business में interest है, जो business करना चाहते हैं, self entrepreneur होना चाहते हैं, so be a job creator.
Don't seek jobs, create jobs for others. अपने लिए अपना एक स्टार्टअप शुरू करो और दूसरों को जॉब दो. उसमें आप सोलर एनर्जी पर अवेयरनेस, आप इसमें रिसर्च भी कर सकते हैं और इसमें आप इसके प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारे जो आप लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करके उन्हें प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों में या स्कूलों में, कॉलेजेस में, बिल्डिंग्स में सोलर पैनल्स लगाएं और बिजली सोलर से यूज करें और बिजली बचाएं. So it is a very socially relevant field which many people are doing, and those our younger youth, if they are interested, they should also opt for this. Now, earth, soil, and agricultural sciences, this is becoming a new fashion now, agricultural sciences, because so many students, youngsters are now doing organic farming and they are doing so many research in agriculture. So this is another field where science students can go. Now, environmental science and climate science. So now we all know that the G20 presidency in India we have this year, and there is a program PM has started that is lifestyle for environment. So environment and climate is a very concerned area, and it's a very important area where a lot of research and a lot of inputs are needed, and we all have to work for it. So if you see some problem कि अरे बड़ी गर्मी है या अरे वेदर खराब है, अरे यहाँ पे गंदगी है, वो क्या करे, गवर्नमेंट कुछ नहीं करती. So this is not the approach we should have. Don't do that. Be a problem solver. अगर आपको अपने आसपास प्रॉब्लम्स नजर आती हैं तो आप उनका सोल्यूशन सोचो. You are a science student, you are young, you can do so many things. So look for solutions. Look at the problems and then think of their solutions. So be a problem solver. Don't just criticize and crib and then आपकी ड्यूटी खत्म, उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है. Don't be that. We want our youth to be very energetic, very motivated and work for the betterment of country. क्योंकि इसको डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री तक आप ही लोगों को ले जाना है. So environment and climate science, it has a lot of problems. We know that there are problems, but find out solutions and work for them. There is a lot of support will be there. You will find support. Once you start it, you will find support. Like, see, we saw a problem. Like, as a scientist, I saw a problem that students don't know about various research opportunities, and the researchers or scientists, they say that students are not good. They are not getting good students. So where is the gap? So now we are trying to fill that gap, that we should groom students, we should train them scientifically, and we should make them eligible for the scientific research, so that this research have good trained students and students also have good jobs. Okay, this is most important thing which you all have to learn and develop. So skills. Now skill is a very important criteria of any job or any employment. Now अगर हम अपने घर में किसी को खाना बनाने के लिए भी रखते हैं तो ये तो एक्सपेक्ट करते हैं ना कि उसे खाना बनाना आता हो, कुकिंग के बारे में पता हो, ABCD पता हो कुकिंग का. अगर वो कहेगी मुझे खाना बनाना ही नहीं आता तो फिर हम उसे रखेंगे क्यों? शी इज यूजलेस फॉर अस, राइट? सो इसी तरह अगर मैं साइंटिस्ट हूँ, अगर मेरे पास कोई स्टूडेंट आता है और कोई कहता है कि मुझे जॉब चाहिए, आई वांट टू डू रिसर्च, और अगर मैं उसको एक डॉक्यूमेंट लिखने के लिए देती हूँ और बोलते हैं नहीं मुझे तो वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं आता, या मुझे तो एक्सेल शीट बनाना ही नहीं आता, या मुझे तो प्रोग्रामिंग नहीं आती, so then they are useless. I have to teach them that also. I will not take such students who doesn't know anything. So learn skills. This is the most important part of research. So there are some skills which are important for a research career, for a scientific career, which are useful for jobs. So I will mention, like students should be familiar with Linux. Linux is an operating system. Most of the research institutes work in Ubuntu, Fedora, in a Linux operating system. Windows also many people use, but you should be familiar. If you know Linux, it is good. It will be better. Numerical methods is something which solves your problems, mathematical problems. Suppose you have to solve a बड़ा सा integration दे रहे हैं आपको, बहुत difficult है, और वो किसी भी तरह से फॉर्मूलों से सॉल्व नहीं हो रहा है, वो सॉल्व हो ही नहीं सकता. देयर आर सच प्रॉब्लम जो एनालिटिकली सॉल्व की ही नहीं जा सकती, तो उनको सॉल्व करने के लिए आपको न्यूमेरिकल मेथड्स होते हैं जहां पे आप उनको डिवाइड करके और उनको प्रोग्रामिंग करके लॉगरिथम में लिख के उनको सॉल्व करते हैं, और उसके लिए फिर आप प्रोग्राम लिखते हैं. सो फॉर दैट यू शुड नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आल्सो, दैट इज फोर्ट्रान, C++, पाइथन,
or many whatever programming languages, but you should know how to solve the problems. So numerical methods is very important skill which students should know. They should learn. Many colleges teach. I don't know if your college is teaching this. And programming you should know. Now, MS Office is ABCD of computers. So Word document, Excel, sheet, PowerPoint, ये सब बच्चों को आना चाहिए. आने से मेरा मतलब है you should be an expert of this. So, and data representation and graphics. This is also very important. Like suppose there is a huge data. अब मैं कहाँ देखने बैठूंगी कि कौन किसने ज्यादा मार्क्स आए. We create a graph and then it is easily visible that what is the situation. So these things students should learn. Web designing is a complete occupation in itself. You learn web designing, you can design websites for others, and this itself is a complete, you are a freelancer web designer, and that's it. You have a company, and then you can earn as much as you want. Data science, I told you, it's a very good profession these days. It's coming up, and there are a lot of jobs are created in data science. Machine learning, we are using in now research also. And you should do, wherever you get courses, you should do courses in machine learning. And this is very useful field for jobs, wherever, even in R&D, in government, in industry, everywhere. And even in research, in academic research, machine learning is becoming day by day more and more important. So if you find courses, you should join such courses. These are all available somewhere or the other, you have to find out. We also conduct many courses, so we can also help you with that. You should tell us what you want to learn. Writing skills, I told you, you should have good writing skills. And literature survey. You should know how to do a survey of a problem. So if you want to understand a problem, उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करना, उसके बारे में पढ़ना और क्या-क्या अब तक हो चुका है और क्या करना बाकी है. वो जब तक आपके पास नहीं होगा, तब तक आप उस प्रॉब्लम में आगे नहीं बढ़ सकते. तो इसलिए तो किसी भी चीज के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, उसके लिए फर्स्ट सबसे पहले उसका लिटरेचर सर्वे करना बहुत जरूरी है. So these are the skills which you all should learn and develop. You should be expert with all these things. So with all this, build your CV. This is the most important advice I have for you. For all the students, please build your CV. Build your CV मतलब लिखना CV नहीं कि लिख लिया बड़ा अच्छा से सुंदर सुंदर नहीं. Make it good to be employable. Jobs के लिए आपका CV, it should be a good CV. Learn skills. So उसके लिए क्या क्या करना है? Learn skills and add them to your CV. Do research projects, internships and add them to your CV. Attend various courses, seminars, workshops on scientific work and then add them to your CV. Find a mentor. Talk to scientists. Listen to their work. जहाँ भी मौका मिले, listen to scientific research, उन लोगों के, उनकी journey के बारे में और उनसे सीखो, उनसे समझो कि वो लोग क्या करते हैं, कैसे उन्होंने achieve किया, क्या क्या किया, क्या problems हैं, क्या challenges हैं, all that. And write to various universities, research institutes. लिखो ना, 100 यूनिवर्सिटी का लिस्ट बनाओ, सबको मेल भेजो कि मुझे आपके साथ इंटर्नशिप करना है. कोई ना कोई आपको जवाब देगा. You may find one. So apply to different internship programs of national and international organizations. ये आपको मैंने I have given you the entire list of national and international organizations. Internship programs उन सब के होते हैं. वहाँ पर आप apply कीजिए. Look for various computer courses, various government jobs, startup grants, extracurricular activities. Do some volunteer work with social NGOs, social cause में. ये सब चीजें जब आपकी CV में होती है ना तो बहुत सामने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है कि ये कैंडिडेट जो है he is very enthusiastic, very motivated, he's done multiple works and he is a very एक काबिलियत का एक प्रमाण है आपका रिज्यूमे. सिर्फ अपने नाम और एड्रेस और लिख के और सिर्फ मार्क्स लिख के से आपका CV कंप्लीट नहीं होता. These things should be there in your resume. Then you are good for R&D sector jobs in government, in academia or in industry. So VMR, what we are doing is we are bridging the gap between the students and the opportunities. That's what we have done. We are doing now. So we are there to guide. We have started this initiative. We mentor research, and it is a non-profit organization under Skill Foundation. And we are there to guide you in your science career. So you can contact us on this email. We will help you. We will help you in finding a mentor, or you interact with eminent scientists. If you want to meet eminent scientists, we have already invited scientists. You are already listening to. So find a mentor. We can help you finding a mentor if you want. Research projects,
in research skills, and building your profile. Building means, which I told you all that. Building means not the writing your profile, a CV. No, build your profile. Learn and build. Learn and build. So build a good CV with lots of work, hands-on experiences, research experiences, and various skills. So now you should laugh that, okay, what is this? So your CV should be something is comparable to a pizza. Now, what is a pizza? Now, it has your base and then you have a lot of toppings. So what you are learning in your college, in BSc, MSc, that is core courses, like you are studying mathematical physics, quantum physics, atomic, molecular thermodynamics, all these courses you're studying, you're doing lab work. They are your foundation, your base, which is very important. So you should learn that seriously. You should be good in that. And what is the on top, in the toppings? That is cheese and then tomatoes, onions, capsicum, peppers, alpinos. ये सब क्या? These are your skills, experiences. So without topping, आपको आपका pizza अच्छा लगेगा? So we like a complete pizza, right? We want a good foundation as well as very good and as well as very good toppings. So make a good CV so that, I mean, if you want a good tasty pizza, then your CV also has to be a very good CV, a combination of both base as well as the toppings. And most important, think positive, believe in yourself, and always visualize a bright future for you. Be fit physically, mentally, and emotionally. Do yoga and meditation for that. And thank you very much for your attention. Thank you so much, ma'am, for your informative lecture. It was really a very good lecture as it has motivated and guided students for the research. And you have gave a number of opportunities. You have opened a new horizon so that they can think in different dimensions. So I thank you, ma'am, so much. Now I think student must know and pursue all these things to plan their career. And with these words, I really thank you, ma'am. Now I introduce our another speaker, Dr. Pankaj Kumar, to you all. Dr. Pankaj Agarwal is a senior scientist at Inter-University Accelerator Center, New Delhi. He is an accelerator physicist with research interest in geochronology and isotope research by employing accelerator mass spectrometer and low energy mass spectrometers. He is an elected member of Indian National Young Academy of Sciences. He has also served a National Core Committee member of INAYAS. He is a life member of IPA, National Academy of Science, India, and Indian Society of Practical Accelerator. He has been awarded with SN Sheshadri Memorial Award by Indian Physics Association for his key role in developing the accelerator mass spectrometer facility at IUAC. So now I request our another speaker, Dr. Pankaj Kumar, to please come and on the video for our students. Sir. Dr. Pankaj is, I think, delayed little. He's just joining. So maybe meanwhile, if students have some questions, we can take. That can be done. If students have any questions, they can ask to the ma'am. You can unmute yourself and speak, or you can write in the chat box. Tamradhwaj Deshmukh, Kuleshwar Sahu, you can ask, beta. जी मैम. Switch on your video also so that we can see you. कुलेश्वर साहू मैम. हाँ हाँ बोलिए. Kuleshwar, ask your question if you have. No ma'am. Any other student? No ma'am. Even faculty. Many students have raised their hands. अरे यार मैं गलती से दब गया. Okay, so if you don't have, please
mute yourself. Meanwhile, can we take queries from registrations, ma'am? Okay, Pranali. See, in registration forms also, students had asked some questions. So, what are the questions, Pranali? Can you just read out? Students can post their questions in the chat box also if you want to talk to us or if you want to ask something. And also, we will give you a feedback form which is for you, not for us. I mean, हमने क्या किया, यानी आपको क्या चाहिए, आपके फ्यूचर के लिए आप क्या जानना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं. So please fill up that feedback form. We will send to all of you. Those who have joined the group, WhatsApp group, we will send you there also and your emails also. So please fill that form and tell us about you. आपके बारे में कि आप लोग क्या करना चाहते हैं और उसके लिए आप लोगों को क्या चाहिए. We should know. हमें पता होगा कि आप क्या करना चाहते हो, आपको क्या चाहिए, तभी तो हम आपकी हेल्प करेंगे. So scientist community is all there to help you. So don't hesitate. अब hesitate करेंगे या शर्माएंगे या नहीं बोलेंगे या नहीं आगे आएंगे तो फिर आपको कोई हेल्प कैसे करेगा. So आप लोगों को ही आगे आना होगा और मेहनत करनी होगी. Yeah, just a minute. Dr. Pankaj is सोच रहे थे 200 से ऊपर जाएगा, 100 से गया, फिर सब लेफ्ट होता गया. शुरू में चला दिया था स्लाइड. Yeah, I'm sorry for that. Dr. Pankaj is just joining. Yeah, are there questions? All the students, the feedback form is given in the chat box. आप लोग यहाँ से भी ले सकते हैं और आपको भी भेज देंगे. Yeah, there are some of the questions from registrations. One such being how to explore your research interest. Okay. So exploring research interest, आपको सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगता है. Now, if you are you a BSc student or you are MSc student, I don't know. But if you are in BSc or MSc, जो भी आपको courses पढ़ाते हैं, suppose in physics you are studying nuclear physics, you are studying astrophysics, mechanics or thermodynamics or statistical mechanics, या chemistry में organic और inorganic chemistry या जो भी, आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है, जो सबसे ज्यादा समझ आता है, आप जिसके साथ आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हैं. सबसे पहले इसका मतलब है कि वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है. प्लस आपको यू शुड लिसन टू वेरियस साइंटिस्ट. लाइक हम आपके लिए कुछ साइंटिस्टों को आपसे मिलाएंगे. वी विल ब्रिंग वेरियस साइंटिस्ट वर्किंग इन डिफरेंट फील्ड्स, जो अलग अलग फील्ड में. अगर आप एस्ट्रोफिजिक्स रिसर्च के बारे में जानोगे ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो आपको अच्छा लगा या बुरा. जैसे मैंने आई गेव यू अ स्मॉल ओवरव्यू ऑफ अ प्रॉब्लम इन अ न्यूक्लियर फिजिक्स. दिस वाज अ न्यूक्लियर फिजिक्स रिसर्च प्रॉब्लम. Similarly, there are interesting subtopics in different other subjects also. So you should explore those interests and then you should listen to various scientists, research. आप उनके suppose you go to TFR website, for example, or you IUAC website, and then वहाँ पे आप जाके देखो कि वो लोग क्या research कर रहे हैं. different faculty के प्रोफाइल देखो, उनके प्रोफाइल, उनको क्या रिसर्च कर रहे हैं वहां पर, और वो पढ़ो और देखो कि आपको क्या अच्छा लगता है. एंड यू विल अंडरस्टैंड कि आपको क्या पसंद है, और देन यू स्टार्ट अप्लाइंग. और सबसे इम्पोर्टेंट है कि बीएससी से ही आपको प्रोजेक्ट्स करने चाहिए. प्रोजेक्ट्स करेंगे तो आपको काम करने का मौका मिलेगा अलग अलग साइंटिस्टों के साथ, और उससे आपको समझ में आएगा कि आपको कौन सा काम सबसे ज्यादा अच्छा लगा. So that is how you have to explore, and then but उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी शुरू से. बीएससी और एमएससी का टाइम अगर वेस्ट किया तो फिर रिसर्च में जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो बीएससी और एमएससी का ही टाइम है जब आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी है अपने प्रोफाइल को बिल्डअप करने के लिए. तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू शुड लिसन टू साइंटिस्ट डिफरेंट स्ट्रीम के,
ताकि आपको उनके रिसर्च के बारे में पता चले। उसके बाद उनके बारे में पढ़ो, देखो, ढूंढो, रिसर्च करो और उसके बाद देखो कि आपको क्या अच्छा लगता है। Yes, one more question is by Miss Priyanshi. She's asking more about JRF. JRF is Junior Research Fellowship. It is you can pass these NET Set 8 exams, so they give you JRF. Junior Research Fellowship, I showed you the amount, 31,000 plus HRA. DA Department of Science and Technology, CSIR, they have lot of JRF opportunities. So उनके website पर आप CSIR में DBT, DST, ये सब में आप जाएंगे तो आपको JRF के अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। और सबसे जो इजी है वो है नेट। इसके अलावा बहुत सारे प्रोफेसर्स के पास भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें उनके पास JRF होता है। एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि यू शुड राइट टू प्रोफेसर्स कि आप पहले वेबसाइट पे जाओ। सपोज आप मुंबई यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स की एक बार लिस्ट देखो, उनके पास देखो कि किसके पास प्रोजेक्ट्स हैं और उसके बाद उनके पास अवेलेबिलिटी होती है जूनियर रिसर्च फेलो के लिए। So you can apply there. So you can work with different professors who have fellowships, or you can pass an exam and then you can choose to कि आपको कौन से इंस्टीट्यूट में। अगर आपके पास नेट या सेट या गेट का कोई एग्जाम क्लियर करके आपके पास फेलोशिप है तो कोई भी इंस्टीट्यूट आपको खुशी से लेता है, क्योंकि फिर उनको आपकी फेलोशिप की चिंता नहीं करनी पड़ती। So you have to try to pass these exams after MSc. एंड TIFR में इवन BSc स्टूडेंट्स जो बहुत ब्रिलियंट है, जो बहुत ही अच्छा करते हैं, आफ्टर BSc ऑल्सो यू कैन अप्लाई डायरेक्टली फॉर PhD इन फ्यू रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। Maybe one more question. I think Dr. Pankaj is already joined, so can we have you made him co-host? Dr. Pankaj, are you there? Yes, he has added as a co-host. Okay. Yes, Dr. Sunita, so you can just invite Dr. Pankaj, and then after his talk, we will take more questions. So now I would Give me a couple of minutes, please. We'll just fix Sure. something and then- Okay, meanwhile, we'll take one more question. I can read out. बायोटेक्नोलॉजी के लिए DRDO, I don't think DRDO has some medical research. ISRO, I don't know. ISRO is only for space research. I don't think, but you have to go and find out on their website. Go to ISRO website. DRDO should have definitely. ISRO, I'm not very sure that they will have biotechnologists because they are specifically for space science research. After MSc biotechnology, what one should choose, job or PhD? See, it is a very personal choice. One should choose job or PhD. ये बड़ा ही पर्सनल सा क्वेश्चन है। कुछ लोगों को सेटल स्टेबल जॉब चाहिए होता है, तो वो आप सब चीज में अप्लाई करो ना, आप सब जगह जॉब के लिए अप्लाई करो। There is no harm. If you get it, then you take a decision if you want it or not, or you apply for PhD also, and then whatever you get, then you choose. So if you do a PhD, after that you do a postdoctoral research, you go abroad and then you do 1 or 2 postdoctoral research, and then you take up a job in some institute. There are 2 ways. So this is one path. You join PhD in some university or research institute, then go abroad for a postdoctoral research, and then, or maybe here also, and then you apply for jobs. Or after MSc, you apply to all these government organizations, and if you get as a scientific officer, and then after that also you can do PhD and postdoc. So what you get is important. So you apply for both, and whatever you get, then you choose. Okay. Any other question, Pranali? Yes, ma'am. There is a question by Dr. Pandey asking how to apply for a project in a government agency. Yeah, government agencies like DST, DBT, BRNS, they are all government agencies, Department of Space.
उनके यहाँ पे DST में बहुत सारे प्रोजेक्ट प्रपोजल्स हैं. आप किस कैटेगरी में आते हैं? देयर आर प्रोजेक्ट्स फॉर फैकल्टी, रेगुलर फैकल्टीज, so they can apply for a project grant. DST में if you go on their website, they have an entire list of the projects. So they have a format, online submission होता है. You have to have a project proposal. You have to prepare a project proposal कि which topic you want to do research. उसके बारे में आपको उनका एक format है कि उसके बारे में आप क्या नेशनली और इंटरनेशनली क्या हो चुका है काम, एक लिटरेचर सर्वे, फिर आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है उस प्रोजेक्ट में, आप क्या क्या करेंगे, फिर उसमें आपको उसमें वो सब दिया रहता है. आपका क्या वर्क प्लान है, आप क्या क्या काम करेंगे, वो सब उसमें दिया रहता है. सो अगर आप उनका फॉर्मेट देखेंगे तो उसमें आप यू हैव टू जस्ट फिल दैट फॉर्म एंड यू हैव टू अप्लाई ऑनलाइन. So DST का तो भी सारा कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशन है. So they have lot of opportunities. DAE also has lot of projects. BRNS, there also you can apply, and CSR. So for regular faculties, there are different projects. For students, there are different projects. And those who have no job, suppose somebody is abroad और वो इंडिया वापस आना चाहता है, उनके लिए भी opportunities हैं, उनके लिए भी fellowships हैं. रामानुजन फेलोशिप, एंड देन देयर आर सो मेनी इंस्पायर फैकल्टी कि आप आइए इंडिया, वहां से हम चाहते हैं कि जो हमारे ब्रेन बाहर चले गए वो वापस आए और यहाँ आकर काम करें. सो उनके लिए भी बहुत सारी फेलोशिप अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप यहाँ आइए, हम आपको कुछ सालों के लिए कुछ फेलोशिप देंगे सो दैट यू हैव सम मनी टू वर्क, एंड देन धीरे धीरे आप रेगुलर जॉब्स ढूंढ सकते हैं अपने लिए. आपको क्या करना है. Dr. Pankaj, can we start? Hello. Hello. This is Kokhan Sinha, ma'am, from Kalyan Pejik College. I'm a student of MSc 4th sem chemistry, ma'am. Okay. मैम एक क्यूरी थी कि मैं ना आगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में रिसर्च करना चाहता हूँ. Okay. तो इसके लिए आपके लिए आपसे गाइडलाइन चाहिए था मैम. एक्चुअली क्या है, 4 जुलाई सन 2012 में हिग्स बोसान जब गॉड पार्टिकल की खोज की गई, उसके बाद मैंने फिर वेदों को खंगालना शुरू किया, देन उसके बाद जितने भी उपनिषद है उसको भी खंगालना शुरू किया. तो इनकी स्टेटमेंट है ना आगे मैच करता गया. मैम ऐसा लगता है कि आपके जो साइंटिस्ट है पुराने चीजों को डिस्कवर मतलब उसको डिकोड करके उसमें आगे बढ़ने के बहुत सारे चांसेस, बहुत सारे ट्रेसेस ऐसे हैं जो अब तक के नहीं मिले हमको. करेक्ट. तो मैम ऐसा है कि मैं ना न्यूक्लियर केमिस्ट्री में उससे आगे मतलब कैसे, मैंने न्यूक्लियर केमिस्ट्री करीब 25 से 30 जो रिसर्च पेपर है पढ़ी है मैम मैंने, तो कैसे इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ. आई डोंट अंडरस्टैंड मैम बट व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. Okay. So please particular guideline. Okay. So see, VMR has some programs. We interact with scientists. Our program. So in that we bring various scientists. So since you have asked for a nuclear chemistry, so we will bring somebody who has expertise in this field. So we can connect you with them. They can come and give a talk. Those students who are interested, they can attend. Or we have a mentorship program also. So we will assign you, you can apply that, and then you can apply for mentorship, and then we will assign you a mentor in that similar field or maybe in that field who can guide you, or maybe at least he can tell you what to do and whom to meet, or maybe they can give you further contacts. So yeah, this is interesting. So you keep in touch with us, you write to us about you, what you want to do, what exactly, your details, and make a resume, send us, and then we will try to connect you to some specialist of your field, your interesting field. Okay. Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. Please note down our email ID. You must have, no? We have sent you invites. So you have our email ID and you are on WhatsApp group also. So no problem. You can contact us anytime. Yes, ma'am. Thank you. Okay. So Dr. Pankaj is here. Yeah, I'm available now. Yeah. Okay, sir. Yeah, hi. I would like to welcome Dr. Pankaj Kumar to the Scientific Induction Program under the National Science Day celebration. Sir, I request you to please come and on your video for the lecture so that students are benefited from your lecture. My video is on. Okay. Okay, thank you, sir. Yeah, should I start? Yes. Yes, Dr. Pankaj. Your introduction is already being done. Okay, thank you. Yeah.
Okay, you can start now. Let me just share my presentation. Screen, huh? Yes, sir. Okay, you see this Yes, sir, it's visible. right? Okay. Yes, yes. Sorry for joining late. In fact, it completely skipped my mind. Thank you, Dr. Mamta Agrawal, for inviting me to share my views as well as मैं थोड़ा IUAC जिस संस्थान में मैं काम करता हूँ उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा. उसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है, क्या क्या रिसर्च अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं आपके लिए फ्यूचर में. I am working at Inter University Accelerator Center, अंतर विश्वविद्यालय त्वरक केंद्र. इसका पहले नाम होता था न्यूक्लियर साइंस सेंटर, नाभिकीय विज्ञान केंद्र. और ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का एक स्वायत्त संस्थान है और ये पहला संस्थान है यूनिवर्सिटी सिस्टम में. It was established in 1984 and then you see this tower. It is having one accelerator. And this accelerator is the biggest of its kind in our country and it started operational in 1991. So the motto or the objective of this place is this, that एक centralized facility है यूनिवर्सिटी सिस्टम के अंदर. कंट्री में एक centralized facility ऐसी है जहां पर ऐसे इंस्ट्रूमेंट ऐसी तकनीक है जो कि हर जगह नहीं हो सकती क्योंकि कॉस्टली है और इसको चलाना मेंटेन करना भी अपने आप में एक डिफिकल्ट काम है. तो इस तरह की एक सेंट्रलाइज फैसिलिटी बनाई हुई है इंटरनेशनल लेवल का, जो कि इंटरनेशनल लेवल के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इस फैसिलिटी को यूटिलाइज करके. और न्यूक्लियर फिजिक्स है, मटेरियल साइंस, एटॉमिक फिजिक्स, रेडिएशन बायोलॉजी, ये फील्ड ऐसे हैं जिनमें ये फैसिलिटी यूज होती है. लेटली मतलब कुछ सालों पहले से इस फैसिलिटी को हम यूटिलाइज कर अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस में भी यूटिलाइज करना शुरू कर दिए हैं. एंड ये जो अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस वाला फील्ड है, इस फील्ड को मैं देख रहा हूँ. सो इसके बारे में भी एक दो एग्जांपल देके आपको बताएंगे. तो ये बहुत सारे एक्सेलेरेटर हैं, जैसे कि लगभग 8 एक्सेलेरेटर हैं अभी जो कि रनिंग में है या फिर एक दो ऐसे हैं जो कि डेवलपमेंट स्टेज में है. ये पिक्चर्स हैं, जैसे कि ये जो मैंने टॉवर आपको दिखाया उसके अंदर इस तरह का एक्सेलेरेटर दिखता है. एंड देन ये स्कीमेटिक डायग्राम है दूसरे लिनियर एक्सेलेरेटर का. फिर बाकी इस तरह के हैं. आप लोग कभी अगर इधर आए दिल्ली में और यू कैन गिव मी अ कॉल कि यू वांट टू विजिट काइंड ऑफ, सो यू कैन कम एंड देन वी हैव पीपल हु कैन शो यू अराउंड. आपको दिखा सकते हैं. ये फोटो में है इसलिए शायद आपको आइडिया न लग पाए, बट ये मेगा फैसिलिटीज हैं, मतलब ये बहुत बड़ी बड़ी फैसिलिटीज हैं. और कंट्री में सिर्फ 1 या 2 या 3 जगह ऐसी हैं जहां पर इस तरह की बड़ी बड़ी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी. तो एक तरह से जैसे कि अभी कुछ सवाल पूछा था किसी ने कि गॉड पार्टिकल का, तो वो भी एक्सेलेरेटर सेंटर है एक फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे, और वहीं पर उसकी खोज हुई थी. तो उसी तरह मतलब उतने बड़े नहीं बट उससे छोटे तरह के एक्सेलेरेटर यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिनसे कि आप बेसिक न्यूक्लियर फिजिक्स, बेसिक मटेरियल साइंस, इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. ये एक्सपेरिमेंटल फैसिलिटीज हैं. ये जो मैंने बताया ये एक्सेलेरेटर्स हैं, और ये जो है इन एक्सेलेरेटर को जहाँ पर यूज करना है, जो बीम लाइन एंड जहाँ पर होता है बीम लाइन में, इसको यूज करते हैं. और ये जैसे कि ये वाला है जनरल पर्पज स्कैटरिंग चैम्बर, ये गामा डिटेक्टर एरे. सो ये गामा रेज को डिटेक्ट करता है एक्सपेरिमेंट में जो निकलती हैं. मटेरियल्स हीरा मतलब हैवी आयन रिएक्शन एनालाइजर. Excuse me, just a moment. Actually, I am at home. I am doing babysitting also. Sorry. Yeah. So then we have got the radiation biology, AMS, accelerated mass spectrometry, material science. So this kind of research हम लोग करते हैं इन सबको यूटिलाइज करके. ये जैसे आप देख पा रहे हैं GPSC-2, मतलब ये जो है न्यूट्रॉन एरे है. तो ये डिटेक्टर एक एरे इस तरह का क्लस्टर ऑफ डिटेक्टर्स बनाया हुआ है जो कि 4 पाई ऑलमोस्ट 4 पाई एंगल को कवर, मतलब सारे एंगल्स को कवर करके
जो भी न्यूट्रॉन निकलेंगे इन एंगल्स में जाएंगे, तो इनको न्यूट्रॉन डिटेक्टर की मदद से हम लोग इनको कैप्चर करके और स्टडी कर सकते हैं, जिससे कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, मतलब दो न्यूक्लियस जब आपस में कोलाइड करते हैं तो जो नया न्यूक्लियस बनता है या नया जो भी पार्टिकल बनता है तो वो कैसा है, क्या है, उस तरह की चीजें, बेसिक न्यूक्लियर फिजिक्स, ये सब कर सकते हैं इसमें। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि ये सब कितना इम्पोर्टेंट है। एक रिचर्ड फेनमैन नाम के बहुत फेमस टीचर हैं, साइंटिस्ट हैं, थे एक्चुअली। तो उनकी आप देखेंगे यूट्यूब वगैरह पे भी देखेंगे, इनके वीडियो जो है ना बहुत अच्छे मतलब बहुत फेमस वीडियोस हैं, और ये फिजिक्स पर लेक्चर वगैरह देते थे। तो 1963 में इन्होंने अपने क्लास में स्टूडेंट्स को पूछा कि ये बात बताओ कि अगर किसी वजह से सब कुछ खत्म हो जाए, मान के चलो, और आपको एक सेंटेंस ऐसा बोलना है अपनी नेक्स्ट जनरेशन को, वो सेंटेंस कम से कम शब्दों का और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सके, तो आप क्या बोलना चाहोगे? Then nobody could reply, and then he replied that he says that I believe it is atomic hypothesis. Atomic hypothesis that all things are made up of atoms. जो कुछ भी है सब कुछ एटम से मिला है, and these atoms are very very little particles. Those move around in a perpetual motion, attracting each other when they are little distance. मतलब जब वो पास में है तो वो अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जब ज्यादा पास में है तो रिपल करते हैं। मतलब जब न्यूक्लियस के अंदर है, देखा होगा न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन जो है वो एक दूसरे को रिपल करेंगे ना, और प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। Anyway, so at IUSC, what we are doing, we are also in some way or other utilizing these atoms in studying the nature, whether it's geological science or whether it's nuclear physics. So basically, researchers are studying nature. Nature ने जो बनाया है उसको हम स्टडी करके देखना चाहते हैं कि ये सब कैसे हुआ, आगे क्या होगा, या फिर जो फंडामेंटल लॉज है वो क्या है, नए मटेरियल डेवलप करके अपनी जो लाइफ है उसको हम लोग इजी कैसे बना सकते हैं। जैसे सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में बात आई, न्यूक्लियर फिजिक्स में हम न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो ये सब बेसिकली हम लोग नेचर को ही एक तरह से स्टडी कर रहे हैं, और उसमें एटम का एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये सब के साथ, जैसे मैंने बताया कि हमने एक प्रोग्राम शुरू किया अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस में एक्सेलरेटर को यूज करने का। तो एक प्रोजेक्ट हमें मिला मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज से, नेशनल जियोटेक्नोलॉजी फैसिलिटी। तो वो प्रोजेक्ट जो है वो लगभग ये जो AMS की जर्नी है और जो यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सेलरेटर इन अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस, इट इज अराउंड 18 ईयर्स पहले से हम लोग शुरू किए। तो धीमे धीमे करते हुए ये सब आगे बढ़ा है। तो हमारे पास इसमें क्या क्या है, जैसे मैंने बताया कि एक एक्सेलरेटर है जिससे कि हम डेटिंग कर सकते हैं। अब डेटिंग क्या होता है मैं बताऊंगा, रेडियो कार्बन डेटिंग, अगर आपने नाम सुना हो तो। फिर है हमारा एक हाई रेजोल्यूशन सेकेंडरी एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री, HR सिम्स है, ये भी एक इक्विपमेंट है जिससे कि हम एलिमेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। फिर एक लेजर एब्लेशन कपल्ड विद ICP-MS है, क्योंकि लेजर एब्लेशन जिसके साथ होता है तो हम सॉलिड सैंपल्स को डायरेक्ट स्टडी कर सकते हैं। और इन सब के लिए लैब वगैरह भी है हमारे पास, है ना, XRD, XR, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। और देखो कंट्री में ऑलमोस्ट हर जगह के लोग इन सबको यूटिलाइज करने के लिए आते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक प्लेस ऐसा है जो कि हम लोग, एक सेकंड, 1 सेकंड प्लीज, आप बेटा वो देखो ना पप्पू प्लीज, सॉरी। सो ऑलमोस्ट हर जगह के लोग आके इधर काम करते हैं, एंड ऑल दीज फैसिलिटीज आर जस्ट फॉर फ्री। तो मैं आपको एक टेक्निक बताना चाहूंगा जिसको मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत कुछ है जो कि यूज का नहीं है। मैं एक टेक्निक आपको बताना चाहूंगा, रेडियो कार्बन डेटिंग। जैसे कि कार्बन के ना 3 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 14, मतलब जिसका कि मास 14 होता है, 14, कार्बन 12
12 मास एंड कार्बन 13 मास। तो कार्बन के जो 12 और 13 जो आइसोटोप हैं ये स्टेबल हैं, मतलब स्टेबल इन द सेंस कि ये टाइम के साथ डिके नहीं करते। लेकिन 14 कार्बन एक ऐसा आइटम है जो कि टाइम के साथ डिके करता है, और ये डिके करता है मतलब ये रेडियो एक्टिव है, और ये जो है इसको यूटिलाइज करके आप किसी ओल्ड चीज की या कोई आर्टिफैक्ट है या फिर कोई वुड पीस है या फिर कोई ऐसा है जैसे क्लोथ वगैरह है, इन सब का या बुक वगैरह है बहुत पुरानी, हजारों साल पुरानी, उन सब का एज निकाल सकते हैं कि कितना पुराना है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी बताऊंगा, और हमने क्या क्या किया है कुछ एग्जांपल में उसके भी दूंगा। आई एम श्योर कि आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा। अच्छा, अब ये बनता कैसे है, एक मिनट, अभी वी गो टू द बेसिक। सो बनता कैसे, तो देखो जैसे कि आप ये देख पा रहे हो कि ये जो है ना, वी आर ऑलवेज बम्बार्डेड बाई, और हम लोगों के पास सदैव कॉस्मिक रेज आती रहती हैं। एंड व्हाट आर दीज कॉस्मिक रेज, दे आर बेसिकली न्यूट्रॉन्स। सो जो सन के सरफेस से या फिर अपनी गैलेक्सी के बाहर से भी कॉस्मिक रेज हमारे पास आती रहती हैं। सो वी आर ऑलवेज सीइंग द कॉस्मिक रेज। So these cosmic rays are high energy neutrons, and when they interact with, जब वो न्यूट्रॉन्स इंटरेक्शन करते हैं नाइट्रोजन से, जो कि नाइट्रोजन आपकी एयर में अवेलेबल है, तो नाइट्रोजन से इंटरेक्ट करके यहाँ न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, और न्यूक्लियर रिएक्शन से 14 कार्बन बनता है। तो ये 14 कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करता है तो 14 कार्बन CO2 बना लेता है, और ये CO2, 14 कार्बन CO2, this comes down to the earth on this comes down to the trees basically, and the tree, they absorb CO2 in the photosynthesis process. So tree के पास ये 14 कार्बन CO2 आ गया, and this tree they not only absorb 14 कार्बन CO2, they also absorb 12 कार्बन CO2. So 12 कार्बन वाला CO2 भी होता है, 14 कार्बन वाला CO2। एंड व्हाट द प्लांट्स डज, प्लांट क्या करते हैं कि CO2 लेके ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, और जो कार्बन है वो इनके अंदर प्लांट्स के अंदर जमा होता रहता है। तो प्लांट्स में 14 कार्बन ऐसे आ जाता है, और प्लांट्स को हम लोग खाते हैं तो हमारे अंदर भी आ जाता है, प्लांट्स को एनिमल खाते हैं तो उनके अंदर भी चला जाता है। प्लांट्स का कोई भी चीज हम बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल दरवाजा बना रहे हैं, तो उसके अंदर भी रहेगा। लेकिन जब तक प्लांट्स जिंदा रहते हैं तब तक तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसके बाद तो फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है। तो जैसे ही बंद होता है तो ये 14 कार्बन तो इसका सप्लाई तो बंद हो जाता है, मतलब नहीं आता। तो होता क्या है कि 14 कार्बन टू 12 कार्बन जो रेशियो है वो धीमे धीमे अब कम होता है। तो प्लांट की डेथ के बाद 14 कार्बन टू 12 कार्बन रेशियो, जो 14 और 12 का जो रेशियो है वो धीमे धीमे कम होता जाता है। इस रेशियो को हम लोग मेजर कर लेते हैं, और मेजर करके इस रेशियो को मेजर करके इस वो ले लो इस रेशियो को मेजर करके हम एज पता कर लेते हैं कि इतने दिन पहले ये प्लांट डेड हुआ था। सिमिलरली जैसे मैंने बताया कि ह्यूमन के अंदर भी ये चला जाता है, तो ह्यूमन के अंदर ह्यूमन के अंदर जब तक ह्यूमन जिंदा है तब तक तो ठीक है, और जब जैसे मर जाएगा तो उसके बाद ये रेशियो धीमे धीमे कम होता जाएगा। तो जब तक जिंदा रहता है कोई भी चीज, तो रेशियो जो होता है वो लगभग ऐसे होता है कि 14 कार्बन टू 12 कार्बन रेशियो, 12 कार्बन इज अराउंड 98.9% and 14 carbon is very less, 1 into 10⁻⁻⁻. अच्छा, और क्या तरीका है कि हम लोग बॉम्ब पल्स, जैसे कि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्टिंग करते हैं ऑन सरफेस,
तो उसमें भी बहुत सारे न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं, और वो न्यूट्रॉन नाइट्रोजन से इंटरेक्ट करके दे कैन ऑल्सो मेक 14 कार्बन, एंड दिस यू कैन सी दैट इट हैज हैपेंड दैट 14 कार्बन लेवल हैज गॉन अप। तो हम इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। आई एम सॉरी फॉर द फियास्को, एक्चुअली आई एम एट होम। वेट अब लो नहीं प्लीज। आप क्या कर रहे हो? आप देखो, बॉल ले लो प्लीज, बॉल ले लो। अच्छा वो देखो लुक, पप्पू चल रहे, देखो उसमें देखो। हाँ सॉरी, कैन यू सी मी? एनीबॉडी कैन टेल? हेलो? No, now you are visible. Yes. Oh, I'm sorry, Mamta ji. Actually, I am at home and I'm looking after my son also. Okay. तो अभी क्या है कि now there are a lot of things going on. जैसे कि हम लोगों का, जैसे इंडिया की अगर बात करते हैं तो हमारे पास हिमालय है, और हिमालय में लगभग 54,000 ग्लेशियर्स हैं, और लगभग 60,000 किलोमीटर का स्क्वायर का एरिया ये ग्लेशियर्स कवर करते हैं। अब आपने न्यूज में या इधर उधर सुना होगा कि धीमे धीमे ग्लेशियर जो है मेल्ट हो रहे हैं, और बहुत तेजी से मेल्ट हो रहे हैं। तो अब तेजी से मेल्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जो रिवर्स हैं जो कि ग्लेशियर से निकलती हैं, वो रिवर धीमे धीमे, अगर ये मेल्ट हो गए सारे तो ड्राई हो जाएंगी, और ड्राई हो जाएंगे तो ये होल लॉट ऑफ पॉपुलेशन, जो कि कितने लोग जो रिवर्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, उन सब के लिए बहुत मुश्किल होगा। हो क्या रहा है कि सी दिस इज द फिगर ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर, जहां से रिवर गंगा निकलती हैं। तो ये जो है ना फोटोग्राफ्स हैं, फोटोग्राफ्स के बेसिस पे ये बनाया गया है। फोटोग्राफ्स आइदर या तो ऐसे हैं जो कि लोग वहां जाके फोटोग्राफ लिए हैं उन्होंने, या फिर सैटेलाइट फोटोग्राफ्स है। तो जो भी स्टोरी हमें पता है गंगोत्री ग्लेशियर के बारे में, वो 1780 से पहले का नहीं है। तो 1718 से अगर देखेंगे तो 1718 में ये ग्लेशियर यहाँ तक था, और 2001 में ये यहाँ तक आ गया। तो धीमे धीमे ये ग्लेशियर का साइज जो है ना वो कम होता जा रहा है, एंड करंट सिचुएशन ये ग्लेशियर लगभग यहाँ तक आ चुका है। तो जो कुछ भी हम जानते हैं वो पिछले लगभग 200 साल पुराना है, लेकिन ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो होता है ना, वो 200 साल इज नथिंग, बिकॉज अर्थ फॉर्मेशन, अर्थ जो बना है वो भी बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले बना है। तो अगर 200 साल की बात देखी जाए तो उससे तो ये पता चलता है कि ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि 200 साल से हम आगे के हजारों साल या आगे के लाखों साल का प्रेडिक्शन तो नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हजारों साल पहले क्या होता था, हजारों साल पहले क्या ये तब भी ग्लेशियर कम हो रहे थे, या फिर ये ग्लेशियर कम हुए फिर बढ़ गए। मतलब ऐसा तो नहीं कि फ्लक्चुएशन वाली बात हो। तो इसके लिए हम क्या करें, उतना पुराना तो ना तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड है ना फोटो है, तो क्या करें, तो हमें जाना पड़ेगा रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड्स के पास। जो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड्स वो कौन से हैं, जिनकी हाफ लाइफ, जैसे कि कार्बन को हम यूज कर सकते हैं जिसकी हाफ लाइफ 5730 साल है, और कोई भी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड जो है 10 हाफ लाइफ तक हम उसको इजीली मेजर कर सकते हैं। तो लगभग 50,000 साल पुरानी बात अगर पता करनी है तो हम 14 कार्बन को यूटिलाइज कर सकते हैं, जो कि हमने किया है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो कि हमने किया है। तो एग्जांपल ये है कि जब 2004 में सुनामी आई थी अपने सदर्न इंडिया में, साउथ इंडिया में, तमिलनाडु वगैरह के आसपास, तो अंडमान भी इससे अफेक्ट हुआ था। तो हम लोगों ने एक IIT कानपुर के ग्रुप है जो कि इस तरह की स्टडी करते हैं, जिसमें पहली सुनामी मतलब पुरानी सुनामी इवेंट्स क्या क्या आई वो देखने के लिए। तो उसके लिए अंडमान में 7 मतलब एक गड्ढा खोद के वहां से सैंपल्स लिए गए। वो ऐसे देखिए, ये एक गड्ढा है, यहाँ से इस तरह के सेडिमेंट सैंपल लिए गए, और इन सेडिमेंट सैंपल का डेटिंग किया गया। और इन सेडिमेंट सैंपल को जैसे जब भी सुनामी आती है तो क्या करती है कि सी वाटर जो है, ओशन वाटर जो है, उसको ओशन वाटर को अपना लैंड की तरफ, मतलब जमीन की तरफ लेके आती है। तो ओशन में जो भी चीज है, चाहे वो सेल है
चाहे ओशियन क्रिएचर है, वो सब भी उसके साथ आ जाते हैं, वो डिपॉजिट हो जाएंगे। तो जहां जहां इसको कहते हैं कोर, तो इस कोर में जहां जहां इस तरह के सिग्नेचर मिले कि ओशियन वाटर कुछ ओशियन क्रिएचर वगैरह है, उसको हमने डेट करके देखा। और डेट करके देखा तो पिछले 5,000 सालों में, 7,000 सालों में, 7,600 सालों में 7 सुनामी इवेंट हमें पता चले अंडमान एरिया में। तो कैसे किया है? कोर निकाली, सी का सिग्नेचर देखा, और उस जहां पे सिग्नेचर है उसके रेडियो कार्बन डेटिंग कर ली। तो 7 सुनामी इवेंट, एक तो 2004 में जो तो था ही, वो तो अभी सबको पता है। दूसरा सुनामी इवेंट मिला 1881 में, 1762 में, 1679 में, एंड देन प्री हिस्टोरिक सुनामी मिला जिसमें कि 1300, 1480, 2000, 3000 BC, मतलब बिफोर क्रिश्चियन एरा। हाँ, ये ले लो, ठीक है। वो देखो फोन, देखो फोन। तो इस तरह की एक स्टडी थी, और भी हम कई तरह की स्टडी कर चुके हैं, जैसे कि बहुत सारे पेपर, लगभग 80 के करीब पेपर पब्लिश हो चुके हैं। एक हम स्टडी जो रेडियो कार्बन डेटिंग को यूज करके कर रहे हैं, वो ये है कि जैसे कि अगर आप नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं, तो नॉर्थ इंडिया में क्या है कि जैसे विंटर आते हैं, विंटर के सीजन में बहुत ज्यादा पोल्यूशन बढ़ जाता है। उसका मेन रीजन तो ये है कि जो एयर है, जो एयर स्पीड है एयर का, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो लोकल पोल्यूशन है, मतलब लोकली जो पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है वही वही रहता है, वो चल नहीं पाता, आगे पीछे नहीं जा पाता। मोबाइल देखो, मोबाइल। तो अब एक इस तरह की है नॉर्थ इंडिया में कि ये पोल्यूशन की वजह क्या है, इसका रीजन क्या है। तो प्रोमिनेंटली 2 रीजन आते हैं। एक तो रीजन ये आता है कि जी हरियाणा के या पंजाब के किसान जो है ना, वो धान का जो बचा हुआ मटेरियल होता है उसको जलाते हैं, और जलाने की वजह से जो पोल्यूशन होता है, वो पोल्यूशन हवा न चलने की वजह से वहीं का वहीं रहता है। दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है, दिल्ली या नॉर्थ इंडिया के जो भी सिटीज है। दूसरा, लोग कहते हैं कि दिल्ली में कारें बहुत ज्यादा है, और कार ज्यादा होने की वजह से जो पोल्यूशन है वो दिल्ली वालों को परेशान करता है। अब इसमें क्या होता है कि कार में जो ईंधन पड़ता है, जो पेट्रोल पड़ता है, वो पेट्रोल कैसे बनता है? पेट्रोल जो बनने का जो प्रोसेस है ना, वो मिलियंस ऑफ ईयर लेता है, मतलब लाखों साल इस प्रोसेस को बनने में लगते हैं। होता क्या है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक मटेरियल जो है, हाँ, वो मोबाइल फोन देखो। अच्छा, ठीक है, मेरे पास ये देखो। तो जो मटेरियल है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये अर्थ के अंदर दबा रहता है। आपको क्या चाहिए बताओ? आप मोबाइल देखो ना प्लीज। 2 मिनट बस, ऑफ दे दे। सॉरी, आप मोबाइल देखो। अच्छा, तो आप चुपचाप यहाँ बैठो, फिर शांतपूर्वक चुपचाप बैठो। देखो, हाँ, तो मैं बता रहा था, जो फॉसिल फ्यूल, जिससे पेट्रोलियम वगैरह जो है, ये लाखों साल इसको बनने में लगता है। कार्बन के कंपाउंड से बनता है, ट्री वगैरह के जब दब जाते हैं पृथ्वी के अंदर, उससे ही बनता है। लेकिन 14 कार्बन जो है 50,000 साल, जैसे मतलब 10 हाफ लाइफ के बाद खत्म हो जाता है। तो अगर डीजल में या पेट्रोल में 14 कार्बन देखेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन जो धान की फसल को जलाएंगे उसमें 14 कार्बन आएगा। सो हमने क्या किया कि हमने कंट्री में हर जगह से ये सैंपल कलेक्ट किया। क्या सैंपल है कि हमने जो है जो एरोसोल, मतलब जो पोल्यूशन, जैसे हवा को इकट्ठा किया बेसिकली। तो हवा में जैसे जब हवा को इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब एक पंप होता है, उसकी वजह से उससे खींचते हैं हवा को, और जो भी हवा के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर जमा हो जाते हैं। तो वो फिल्टर पेपर हमने उसमें ये देखा कि 14 कार्बन कंटेंट कितना है। 14 कार्बन कंटेंट अगर ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि ये जो पोल्यूशन हो रहा है, वो जो धान की फसल या गेहूं की फसल के बाद जो बचा हुआ होता है उसको लोग जलाते हैं, किसान लोग जलाते हैं, उसकी वजह से है। अगर ये कम है,
अगर 14 कार्बन है नहीं या कम है, इसका मतलब ये पोल्यूशन व्हीकुलर इमिशन की वजह से, मतलब कार जो पेट्रोल डीजल वगैरह फेंकते हैं उसकी वजह से। तो इस तरह की एक स्टडी करी। तो अब ये जो इसमें देखोगे आप कि अगर ये रेड है, इसका मतलब ये है कि ये व्हीकुलर इमिशन की वजह से। जितना ग्रीन है वो, इसका मतलब ये है कि ये बायोमास बर्निंग, बायोमास बोलते हैं, जैसे कि जो धान वगैरह का जो रिमेनिंग मटेरियल होता है, दैट इज कॉल्ड बायोमास। सो नाउ यू सी दिस, ये जो है ये सीजन आपका है समर, एंड ये है, नहीं सॉरी, ये समर है, ये विंटर है। तो ये दिल्ली का जो एरिया है, ये देखिए आप, दिस इज नाउ बिकमिंग रेड। समर में नहीं है लेकिन विंटर में है। सो इस तरह का ये पाया कि ये जो पोल्यूशन का जो सोर्स है वो बेसिकली व्हीकुलर एमिशन डोमिनेट करता है। व्हीकुलर एमिशन ज्यादा है और बायोमास बर्निंग कम है। ये पेपर पब्लिश हुआ है जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। और भी काम किए हैं, जैसे कि आर्कियोलॉजी वगैरह के काफी काम हुए हैं। तो इस तरह के काम हम लोग कर सकते हैं। एक काम जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो कोई बायो साइंसेस में किया है, वो ये है कि ये काम जो हमने किया वो एक हॉस्पिटल है दिल्ली में जिसका नाम है ILBS, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेस, और इसके कोलैबोरेशन में किया। तो नॉर्थ इंडिया में एक प्रोमिनेंट डिसीज अभी है, जिसमें कि होता क्या है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन जमा हो जाते हैं। ये देखिए स्टोन है, जो कि कहते हैं ना कि पथरी हो गई है पेट में। तो ये पथरी का ये फोटो है। ये पथरी होती, मतलब इसको फॉर्मेशन जो होता है, इसका बनता कैसे है, वो ये है कि पहले एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है बीच में, मतलब ये जो कोई मटेरियल होता है उसके ऊपर लेयर बाय लेयर ये जमा होता रहता है। ये देखिए लेयर बाय लेयर जमा हो रहा है। तो कई पेशेंट्स में जो ILBS हॉस्पिटल जो है, उनके जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने पाया कि जिनको पथरी है उनको बाकी डिसीज भी हो रही है। जैसे कि कुछ लोगों को कैंसर हो रहा है, कुछ लोगों को और कोई डिसीज हो रहा है। तो उन्होंने ये देखा कि अगर ये पता चल जाए कि पथरी बनना कब शुरू हुई और कैंसर कब से शुरू हुआ, तो कुछ इसका कोरिलेशन पता चल सकता है। तो हमने उनके लिए सैंपल का डेटिंग किया। इसमें हमने क्या किया कि इसका जो न्यूक्लियस है उसका डेट किया, और बाहर की जो लेयर है उनका डेट किया। और न्यूक्लियस जब बनेगा उसका एज पता किया कि ये न्यूक्लियस कब बना। तो हमें इस पर्टिकुलर केस में ये न्यूक्लियस जो है लगभग सन 2000 के आसपास बना। तो देखिए इस तरह की स्टडी भी जो शॉर्ट टाइम स्केल है, इस पर की जा सकती है। और इसको करने के लिए जो बॉम्ब पल्स मैंने बताया था कि ऑन सरफेस न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्टिंग हो जाए, उसकी वजह से न्यूट्रॉन्स बढ़े, वो जो पीक था उसको यूज करके किया। दूसरा एक काम और हमने किया, जो कि CMAP करके एक इंस्टीट्यूट है लखनऊ में, सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट करके है। इसमें क्या किया कि देखो जितने भी आपके सेंट वगैरह जो होते हैं ना, ये कभी कभी बोला जाता है कि हर्बल है। एक्चुअली में बहुत बार ऐसा होता है कि ये हर्बल नहीं होते, ये सिंथेटिक प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो सिमिलर टेक्निक यूज करके अगर 14 कार्बन ज्यादा होगा इसका मतलब वो हर्बल है, और 14 कार्बन कम होगा इसका मतलब वो सिंथेटिक है। तो हमने 11 सैंपल्स की टेस्टिंग करी। उन 11 सैंपल में आप ये देखो, ये PMC मतलब परसेंटेज ऑफ मॉडर्न कार्बन, मतलब 14 कार्बन परसेंटेज कितना है। ये एक सिट्राल है। सिट्राल मतलब सिट्राल जो होता है, जो कि आपको जैसे जो लेमन ग्रास होता है ना, लेमन ग्रास का ऑयल मान लो, और इसका यूटिलाइजेशन जो होता है वो बहुत है। जैसे कि साबुन में जो सुगंध आती है, या आइसक्रीम में जो स्मेल आती है, या फिर आपके सेंट वगैरह में भी आती है, तो जो स्मेल उसके लिए ये डाला जाता है। तो 3 नंबर पे देखिए, ये मार्केटेड सैंपल ऑफ प्योर सिट्राल, मतलब ये इस तरह से मार्केट किया जा रहा था, मतलब मार्केट में इस तरह से अवेलेबल था कि ये हर्बल प्रोडक्ट है।
ये हर्बल प्रोडक्ट है, मतलब ये प्योर मतलब ये नेचुरल प्रोडक्ट है, लेकिन एक्चुअली में नेचुरल नहीं है, इसमें 14 कार्बन वैल्यू बहुत कम है। सिमिलरली ये भी ये मेंथॉल था। मेंथॉल मतलब जो कि आपका ये जो पुदीना जैसी स्मेल देता है, जो कि टूथपेस्ट वगैरह में पड़ता है और भी कई जगह यूज होता है। तो ये भी हमें पता चला कि ये भी सिंथेटिक है, ये एक्चुअली हर्बल नहीं है। तो ये नेचुरल गैस की टेस्टिंग भी 14 कार्बन यूज करके की जा सकती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि रोज ऑयल जो होता है ना, रोज ऑयल इज इज बेसिकली वेरी कॉस्टली। मतलब जो गुलाब का जो ऑयल होता है, गुलाब का तेल जिसे बोलते हैं, वो बहुत कॉस्टली होता है। ये लगभग 10 लाख रुपए का 1 लीटर होता है। और जो गुलाब का जो ऑयल होता है उसमें जो स्मेल आती है, उस स्मेल को आप सिंथेटिक एक कंपाउंड होता है उसको यूज करके भी सेम स्मेल ला सकते हैं। तो जो फेक ऑयल होते हैं वो लगभग 10,000 रुपया किलो के आसपास आता है, 10 लाख एंड 10,000। अब फार्मर्स लोग जो रोज प्लांट की खेती करते हैं, मतलब जो गुलाब की खेती करते हैं, उनका जब जब जहां बेचते हैं वो तो फिर जो है 10 लाख रुपए के हिसाब से बिकना चाहिए, लेकिन एक्चुअली क्या है, जो फेक ऑयल आ जाता है ना, इसकी वजह से उनको भी लॉस होता है। तो उस तरह का भी एक काम हमने किया हुआ है। तो इसमें भी हम लोग ये चीजें भी कर सकते हैं। तो ये कुछ काम है जो कि हमने किए हैं। और मैं आपको और भी एग्जांपल देना चाहूँ, जैसे आर्कियोलॉजी का कुछ काम है, जैसे कि हरियाणा में एक जगह है राखीगढ़ी करके। राखीगढ़ी में एक पुरानी, मतलब हजारों साल पुरानी एक साइट मिली है, मतलब एक जगह है जिसमें कि हमारे पूर्वज जो बहुत पहले कभी रहते थे, तो उनका डेटिंग वगैरह का काम है। लद्दाख में ये राजस्थान, ये जो गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर है, ये वो है। तो इस तरह के बहुत सारे काम हम लोग कंटिन्यूस करते हैं। और ये मेरे ग्रुप के मेंबर हैं। कुछ हमारे पास रिसर्च एसोसिएट्स हैं, कुछ रिसर्च स्टूडेंट्स भी हैं, साइंटिस्ट इंजीनियर का टीम है जो कि हम इस तरह का काम करते हैं। तो आई थिंक मैं यहीं पर रोकना चाहूंगा। और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर। Anyone can ask question if they have. Anybody? So I think, sir, your lecture is so clear and so informative that everybody's enjoyed the lecture. So I thank you so, sir, so much for the wonderful lecture. We all liked your commitment towards the research, and I think this is a great learning for our students. They can learn many things from your lecture. They can make career in this field. And with this, I now request Dr. Latika Tamrkar to present vote of thanks. Very good afternoon to all of you. I'm very honored and privileged to get an opportunity to propose a vote of thanks on this special occasion, that is National Science Day celebration program. On behalf of the college, I would like to extend my deep regard and heartiest thanks to our guest speaker, Dr. Mamta Agrawal ma'am, nuclear physics scientist. We are really enlightened with her knowledge. And ma'am, you really show and open the path, open new horizon for the students to take up their career plans. Thank you so much, ma'am. My sincere thanks to the guest speaker, Dr. Pankaj Kumar, for detailing the scenario and mapping of major events taking place in India and worldwide. Thank you so much, sir. I also extend my sincere thanks to Dr. R.N. Singh, sir, Principal, Government VYT PG Autonomous College, Durg, for his
constant help and guidance that radiated a source of energy within us. Thank you so much, sir. I would like to thank Professor Ajay Singh sir and Professor Anil Srivastav sir, coordinator of the National Science Day Celebration Program 2023. I am very much thankful to the member of organizing committee for their involvement in the program. My sincere thanks to all the participants who made the event possible. Finally, I would like to thank all of you for being with us. Thank you so much. I would also like to express my sincere thanks to Durg Science College and all the faculties and all the students who have joined this event. I hope it was useful for you and we will be in touch with you. हम आगे भी जो programs करेंगे अलग अलग subjects के scientists को invite करेंगे जो आपको अपने अपने research के बारे में बताएंगे और उन सबको सुनने के बाद आप लोग अपना पाथ डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना है, आपको क्या करने की इच्छा है और स्किल्स वगैरह जो सीखने के लिए आप लोगों को कभी भी कोई गाइडेंस चाहिए अपने करियर के लिए you can always contact us. We have already joined, we have made a WhatsApp group for you all. So you're all there. Please write to us and be in touch and please feel free to discuss your problems in career guidance. We will guide you and we will help you and support you to get you a mentors, eminent scientist. And like Dr. Pankaj, as he showed in IUAC, right from accelerator physics, nuclear physics, astrophysics, and then now they've also started about environment. So many new research is happening there, and they have many interesting programs for students. So आप लोग अगर चाहें आपका college organize कर सकता है एक visit to IUAC. It's a wonderful facility. आप ले जाकर students को दिखा सकते हैं. They have that facility and they show to students all the instruments, how they are functioning, what they are working. And they have also MSc program. MSc students can go there and work there as an intern. Even BSc students के लिए भी उनका internship program है. तो BSc students भी जाके वहाँ पर internship कर सकते हैं. एक बार जरूर जाके देख के आओ. It's a wonderful place to go and learn. So, and there are many other such institutes like PFR, PRC in India. There are so many. So, opportunities की कोई कमी नहीं है. आप लोगों के अंदर बस इच्छा चाहिए और थोड़ी मेहनत भी चाहिए. So, with that, I end this workshop and thank you all for being here and thank you so much. I request everybody to please on their video so that we can have a screenshot. Join group photo, yeah. Those who are there, please on your video. Very few videos are coming. Now they are coming, ma'am. Okay. Okay, I thank you again, ma'am, and Pankaj sir, and the entire team and the coordinator of the program for the wonderful organization of this program. We will stay in touch with you, ma'am. That's a great organization, at least for our BSc and MSc students. Directly, they can go in the various fields, as you have told, as you have shown a new horizon for the students. Open a new horizon. Thank you so much. Thank you so much. Thank you very much, everyone. Thank you very much, everyone. Yeah. Okay, now we can leave, I think. Leave the meeting. Yes.